Hello everyone, today I am going to start the topic of input statement in Python. In Python, to take input from the user, we use input function. This function prompts the user to enter data. So we were study in previous class what is input. Input, that means enter the data into the computer system, okay, through the device. Okay, here in Python, to take input from the user, we use input function. Okay, in Python, to take input, take you are understood input, that means feed the data into the computer. Okay, take input from the user, we use input function. This function prompts the user to enter data. Okay, that means input function prompts user to enter data, that means user can input or enter the data. Okay, and syntax like input prompts. This input function consider everything as string. Input considered everything as string, that means character, whether the user enters a number or string, but input treats them as accordingly only, them as string only. Okay, inputs only treat string, that means characters. So in order to consider input value as other than string, we have convert into other data types. That means in order consider the input value as other than string, okay, we have convert into other data type. You want to, okay, write our input decimal numbers, so you can change the other data type like the int. Okay, you want to input decimal point, you can change the data types like float. Okay, for example, here equal input brackets inverted comma enter your name. Okay, and b equal to input enter your marks. Okay, next cannot calculation to string. Do you know everyone? No, cannot do calculation on string, so it converted into the other data type. You want to calculate, okay, number, you have changed the data type like int, float. Okay, so next, thus the changed statement will be b equal to int brackets input enter your marks. Okay, here has, that means comes to enter integer data value. C, that means here C float input enter your price of the item to input decimal number. That means you want to input any integer value, you can change the data type like b equal int. Okay, here b assign int. Okay, that means you want to enter the numbers. Okay, you put the int data type. You want to enter float number, that means, okay, float or decimal number, so you can use the float data types. So I hope everyone understood what is input statement in Python. Okay, so next topic here, output statements. Output statement in Python, the print outputs complete line and then move the next line for subsequent output. Syntax here, print value 1 comma value 2 dot value n. For example, a equal to 10, print value of a. Okay, inverted comma value of a inverted comma close and a. Okay, output you have studied in the previous class. Output, that means get the result after the processing, is called the output. Output statements in Python are used to display result, message, okay, or value on the screen. Okay, because user can see them. Okay, like here syntax here, do you know? And for example, here a assign 10 assign a. Okay, a equal to 10, that means 10 assign a. Okay, print value of a
Okay, for example, here the input and output statement in Python. Okay, input equal to int, brackets input, enter first numbers, brackets close, num2 num2, that means it is variable, int is data type, input enter second number, temp equal to num1 equal to num2, num2 equal to temp, print now the value of num1 here, print now the value, brackets num2 comma inverted comma close and comma num2. Okay, here example input and output statement in Python programs. Here programs is program to swap two variable values. Okay, that means here is one variable, two variable. Okay, you want two variable num1 num2 here. Okay, value is 23, okay, and 45. Swap, that means 45 is here, okay, in this variable, and 23 is swap in this variable. Okay, so here यहाँ जो प्रोग्राम्स हैं देख सकते हैं, once again Python program to swap two variable, that means do you know everyone, so I have discussed in previous lecture. Variable is a location of memory that holds the data or value. तो आपने यहाँ देख सकते हैं प्रोग्राम स्वैप का दिया हुआ है टू वेरिएबल का यूज करते हुए. सो हियर num that means variable, num2 variable and temp variable. Okay, so first of all enter first number like 23, okay, and enter the second number 45. here output here see, आप यहाँ देख सकते हैं आपने जो पहला नंबर इनपुट किया है 23 किया है और सेकंड 45 किया है. ओके, हियर 1 लाइन एंड 2 लाइन. थर्ड टेम, यहाँ लॉजिक कंडीशन दी गई है. num1 की जो वैल्यू क्या है 23 है, क्या है 23 है. ये कहाँ जा रहा है, टेम में जा रहा है. टेम का एक वेरिएबल यहाँ देख सकते हैं, टेम का वेरिएबल दिया हुआ है. ये जो वैल्यू असाइन कर दी गई है वो टेम1 में कर दी गई है, टेम में कर दी गई है. तो सेकेंड जब वैल्यू पुट हुआ है एंटर द सेकेंड वैल्यू. ओके, यानी आपने 45 जो होगा यहाँ देख सकते हैं 45. ओके, दैट मीन्स num2 45. num2 कहाँ गया है, ये num1 में चला गया. अब ध्यान यहाँ इस बात को देंगे, जो num1 की वैल्यू होगी वो टेम में चला गया है. num वाला जो वैल्यू होगी, num का जो वेरिएबल होगा वो ब्लैंक हो चुका है, और सेकेंड वाली num2 की जो वेरिएबल होगा num1 में चला गया है. ओके, अब जो टेम1 में चला गया है 23 और 23 अब num2 में चला गया है. ओके, इस प्रकार से जो हमारी वैल्यू हो रही है या चेंजेबल हो रही है, यानी हमारे पास क्या है, num1 का जो वैल्यू है वो टेम में चला गया है, और num2 का जो हमारे पास नंबर होगा वो num1 में चला गया है. ओके, और टेम का num2 वेरिएबल में चला गया है. इस प्रकार से जो हमारा वैल्यू होगा वो चेंजेबल हो जाएगा. तो यहाँ देख सकते हैं इंटर द फर्स्ट नंबर 23 है, सेकेंड 45 होगा, द वैल्यू ऑफ num1 45 एंड नाउ द वैल्यू ऑफ num2 23. तो ये लॉजिक जो दी हुई है, ये कंडीशन आप देख सकते हैं, यहाँ चेंजेबल यानी स्वैप करने का एक लॉजिक दी हुई है. तो यहाँ आप समझने का प्रयास करेंगे एंड देन प्रिंट. इस प्रकार से आपका जो आउटपुट यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, इसको हम लैब में एक्टिविटी करके हम चेक करेंगे.